Good evening, students. We'll continue with the question paper of December 2019, which we have completed 4 questions in the last 2 videos. This will be the concluding video, uh, completing question number 5 and question number 6. Question number 5a, which is for 6 marks. Find the nth derivative of y equal to 1 over x square plus a square. So we don't have a direct formula for this, and this belongs to the chapter of successive differentiation. So first and foremost, I'm going to simplify y to bring it in the standard form. Y can now be written as 1 over x square minus I square a square. So यहाँ पे ध्यान दो नेगेटिव साइन एंड आई स्क्वायर जब होंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो इट्स अगेन द सेम थिंग. ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी बचेगा. एंड यहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे. So when I do it, let me do it in rough work here. You may do it in fair, no problem. So 1 upon x plus IA, x minus IA. इसको हम लिखेंगे a upon x plus IA plus b upon x minus IA. Cross multiplying, I'll have 1 is equal to a times x plus IA into x minus IA divided by x plus IA. b into x plus IA into x minus IA and division में x minus IA. So यहाँ पे x minus IA कैंसिल, यहाँ पे x plus IA कैंसिल. So आपके पास बचेगा a times x minus IA and b times x plus IA. So let's put, say, x is equal to IA and x is equal to minus IA. दो वैल्यूज डालेंगे. When I put IA, फर्स्ट ब्रैकेट जो a के साथ है वो 0 हो जाएगा. So मुझे मिलेगा 1 is equal to a multiplied by 0 प्लस b मल्टीप्लाइड बाई 2ai हो जाएगा. x की जगह पे ai डाल रहा. ठीक है, तो a इंटू 0 इज 0, तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं बचेगी. b की वैल्यू बचेगी 1 अपॉन 2ai. एट द सेम टाइम जब आप x इज इक्वल टू नेगेटिव ia डालोगे इसी इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड तो 1 ही रहने वाला है. सेकेंड इक्वेशन मतलब a के साथ आपके पास हो जाएगा a टाइम्स नेगेटिव ai एंड नेगेटिव ai अगेन, एंड b के साथ इस बार 0 हो जाएगा. सो यहाँ पे नेगेटिव 2ai है a के साथ एंड यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू नाउ इज नेगेटिव 1 अपॉन 2ai. So let's put it here. Back in, say, this equation 1, I can call this. When I put it back in equation number 1, तो मुझे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टर्म्स है will now split into a की जगह नेगेटिव 1 अपॉन 2ai into 1 अपॉन x plus ai and plus 1 अपॉन 2ai जो b की वैल्यू है पॉजिटिव into 1 upon x minus ai. So we got it into two different terms now. And ये दोनों terms के हमारे पास successive differentiation के ready-made formulae है. So of course we'll be using them. Okay. So यहाँ पे fair work पे वापस आ जाते हैं. इसको अब हम split करेंगे 1 upon 2ai into, okay, let me, okay. So this now becomes 1 upon 2ai. I have taken this common here. Okay. ये जो 1 upon 2ai है, I think the software is troubling me today also. There has to be some update. Okay. ये 1 upon 2ai दोनों टर्म से हमने कॉमन ले लिया है. सो हमारे पास अब बचने वाला है
responding slow, but then it is responding very slow. ठीक है, 1/2ai common from both the terms, and यहाँ पे 1 था, and this is being taken common. ठीक है, तो first I'll write the positive term which is x minus ai, ये positive है, and negative 1/x plus ai. ये दोनों terms हमने लिख दिए यहाँ पे. ये हमारा y simplify हो चुका है. Now we have the standard formula of nth order derivative of such y. I'll write it down. Yes. Okay. So if y is equal to 1/ax plus b, you have the formula for the nth order derivative as negative 1 raised to n factorial, a raised to n divided by ax plus b, the whole raised to n plus 1. ठीक है, so इसी के साथ हमारे टर्म को कंपेयर करेंगे एंड यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द फॉर्मूला वाला ए एंड इक्वेशन वाला ए, बिकॉज फॉर्मूला वाला जो ए है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे एक्स के साथ हमारे पास 1 है. सो मेरा जो वाई एन होगा 1/2ai को कोई इम्पैक्ट नहीं करने वाला है यहाँ पे. फर्स्ट टर्म का nth ऑर्डर डेरिवेटिव जब लेंगे, सो -1 रेज टू n एज इट इज, n फैक्टोरियल एज इट इज, a की जगह पे 1 है यहाँ पे x के साथ, तो 1 रेज टू n divided by ब्रैकेट में होगा x minus ai the whole raised to n plus 1. Okay, minus as it is, again -1 raised to n factorial, and again a की जगह पे 1 है because x is multiplied by 1, and denominator this time is x plus ai the whole raised to n plus 1. So let's bring the common terms out. So common terms में मेरे पास -1 raised to n है, n factorial है, 1 raised to n नहीं भी लिखा तो चलेगा because उसकी वैल्यू 1 ही होगी. 2ai as it is, यहाँ पे 1/x minus ai raised to n plus 1 हो जाएगा, minus 1/x plus ai the whole raised to n plus 1. ओके, आंसर को इस फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, हम थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं, इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ देते हैं. सो व्हाट आर वी एक्सपेक्टेड टू डू ओवर हियर, x plus ai, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो r e raised to i थीटा के फॉर्म में आएगा ये, और आई कैन से दिस इज r cos थीटा प्लस r times I sin theta. Basically r bracket के बाहर होता है. So from here I'll say x is r cos theta and a is r sin theta. Okay, we'll see where we can use this. Okay, right now we are concerned with x plus ai. with this हमारे पास x plus ai raised to n plus 1 है. So even in the last video I said जब पावर्स की बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, एक्सपोनेंशियल फॉर्म सबसे फास्ट पावर्स देता है. सो ये पावर्स का रूल हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो यहाँ पे लिखा है इस पे लगाएंगे, तो r raised to n plus 1 मिल जाएगा, e raised to i n plus 1 थीटा मिलेगा. ओके, एंड बिकॉज क्वेश्चन में 1/, है ये x plus ai the whole raised to n plus 1, ये 1/, के फॉर्म में है, तो ये टर्म्स डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, या फिर आई कैन राइट इट एज 1/r raised to n plus 1, एंड e का टर्म डिनोमिनेटर की जगह आई कैन राइट इट इन द न्यूमरेटर विथ नेगेटिव पावर. I'll call this as equation number 2. Now let's remember x plus ai अगर ये है तो 1/x minus ai will be its conjugate. Conjugate में फर्क कितना होता है, r की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है, सिर्फ e का जो पावर होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो नेगेटिव है उसका नेगेटिव लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ये. ओके, now let's combine equation 1, 2 and 3. I'm doing it here itself. So equation 1, 2 and 3 will give me the value of yn as -1 raised to n as it is, n factorial as it is, 2ai, I'll not write it here, I'll rather write only, okay, eraser is not available that easily.
Okay, I'll write only a here, and in place of x minus term, I will have e raised to I n plus 1 theta डिवाइड बाय आर रेज टू n प्लस 1 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे दोनों टर्म से माइनस e raised to negative I n plus 1 theta एंड इफ यू रिमेम्बर मैंने 2i वहां पे नहीं लिखा था, ये 2i यहाँ पे लिखा है। ये 2i आने के बाद ये कौन सा फॉर्मूला बन जाता है? इज इट नोन टू यू? डू यू नो दिस फॉर्मूला? Yes, you do know this formula. It is the formula of sine theta. Okay. Yeah. So what's the formula for sine theta? We know that sine theta is e raised to I theta. Or let me not use theta. Let me use some x here. Fine. Okay. Troublesome. Okay, I'll keep this theta itself. Minus e raised to negative I theta divided by 2i. Okay. So whatever is with I will be your angle there. And that's what we get here. So let's see, look at this particular formula here. I think this program is going to test my patience. Okay. So negative 1 raised to n factorial r raised to n plus 1. एंड ये जो पूरा ब्रैकेट है वो साइन के फॉर्म में आ जाएगा। साइन आई के साथ जो भी है वो आपका थीटा होगा, तो n प्लस 1 थीटा। ओके। अब एट द सेम टाइम आर रेज टू n प्लस 1 जो हमारा है उसको भी हम थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पे एक a भी है। ओके। तो उसको कैसे रिप्लेस करेंगे हम? यहाँ पे नेगेटिव 1 रेज टू n फैक्टोरियल, और इसको रिप्लेस करने का रीजन ये है कि आर की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो या डिवाइड बाय a। अब आर रेज टू n प्लस 1 जो है हमारे पास, आई विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्म, so let me call this as equation star here. Okay, so from equation star, can I say r is equal to a upon sine theta, or I would say 1 upon r is sine theta divided by a. So 1 upon r raised to n plus 1 will become sine raised to n plus 1 theta divided by a raised to n plus 1. So that's what I'm going to replace here. So I'll have sine raised to n plus 1 theta in the numerator, sine of angle which is n plus 1 of theta divided by a raised to n plus 1. So now this becomes negative 1 raised to n factorial divided by a raised to n plus 2 now, because of this 1 here and n plus 1 there. Sine raised to n plus 1 theta and sine of n plus 1 theta. So this is your final answer. And yeah, that's your nth order derivative. This was your question number 5A, which is for 6 marks. Again, bit lengthy, but yes. Okay. I'll do one thing. I'll try to switch to another app because this app is creating a lot of issue. And yes, we can continue there because this is not how we can. Okay. Back with the question here. Question number 5B. So the question says discuss the maxima and minima of the given function there. And in this particular case, this is a question of maxima minima directly. Let's start with f of x comma y, because there are two variables, is x cube plus 3x, xy square minus 12x square minus 12y, 2y square here, plus 21x plus 16. Okay. Now, in the question of maxima minima, you have to find first partial derivative of f with respect to x, and
partial derivative of f with respect to y. When you take derivative, partial derivative with respect to x को छोड़ के बाकी सारे आपके कांस्टेंट बन जाते हैं, y के सारे टर्म्स कांस्टेंट बन जाएंगे, नंबर्स तो ऑलरेडी कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे 3x² वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, सो वाई स्क्वायर बचेगा। 12 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा तो 24x हो जाएगा। ये 2y² ये पूरा कांस्टेंट है, पूरा सिर्फ अकेला कांस्टेंट रहा तो आंसर 0 आएगा इसके डेरिवेटिव का। 21x का डेरिवेटिव 21 होगा और 16 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। एफ वाई का टर्म मीन्स ये जो एफ ऑफ एक्स कमा वाई है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लोगे। एक्स क्यूब के टर्म का डेरिवेटिव 0, एक्स कांस्टेंट वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होगा तो 2xy बचेगा। 12x स्क्वायर अगेन 0, 2y² का -4y हो जाएगा, बाकी के सारे टर्म्स का डेरिवेटिव 0 होगा। नाउ स्टेप नंबर 1 आपको क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढने हैं। To find critical points, you will assume f of x is 0 and let f of x is 0 and f of y is 0. So let me put the values here. 3x² plus y² minus 24x plus 21 ये 0 होगा। At the same time 2xy minus 4y equal to 0 होगा। Now observe ये f of y वाला जो इक्वेशन है ये छोटा है, ओके, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन को पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे तो xy माइनस 2y बचेगा इक्वल टू 0। y कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2। मल्टीप्लीकेशन जब 0 होता है तो या तो फर्स्ट टर्म इज 0 और सेकेंड टर्म इज 0। इसका मतलब है y की वैल्यू 0 है या फिर x की वैल्यू 2 होगी। ओके, ये दो वैल्यूज हमको मिले हैं, एक y की मिली है, एक x की वैल्यू मिली है। हमको पॉइंट्स ढूंढने, क्रिटिकल पॉइंट्स, वो x, y के फॉर्म में होंगे। ओके, सो यहाँ पे दो कैलकुलेशंस होंगे। फर्स्ट कैलकुलेशन, लेट्स नॉट यूज ABC बिकॉज वो क्वेश्चन नंबर होता है। फर्स्ट कैलकुलेशन, y की जगह 0 डाल देंगे। we'll substitute y is equal to 0. So when I substitute y is equal to 0, let's see what we get here. This reduces to 3x² minus 24x plus 21 equal to 0. I'll divide by 3, so x² minus 8x plus 7 equal to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैलसी से सॉल्व करो या फिर डायरेक्टली रूट्स निकालो। x is equal to 7, 1 आएगा। ये x is equal to 7, 1 कब आया है? when y is 0. when y is 0. So for both of them, you will have x is 7 and y is 0, and x is 1 and y is 0. These are two of the critical points. Critical points वो होते हैं जहाँ पे ग्राफ ने डायरेक्शन चेंज किया होता है। Okay, the graph of the function has changed the direction. So ये दो critical points मिले हैं। Fine. The question is not yet over. Y is equal to 0 पे calculate किया है, x is equal to 2 पे calculate करेंगे. So let's take it here. So second part, I will put, say, x is equal to 2 in, let's call this, okay, let me give these numbers. I'll call this as 1. This will be 2. This will be 3. Let's call this 4. So I'll put x is equal to 2 in equation number 4. Okay. So equation number 4, I have 3x² as the first one. 2 डालेंगे तो 12 हो जाएगा ये. Then you have y² as it is because y की वैल्यू नहीं पता है. Then you have negative 24x. So x is 2, so it will become negative 48. And plus 21 as it is equal to 0. So I'm left with y² minus 15 equal to 0, or I can say y² is 15, which means y is plus or minus root 15. Okay, let's not write the roots in decimals. We'll leave it as it is. So this is root 15 when x is 2. When x is 2. Plus root 15 or minus root 15. So again, I'll get two set of points, 2 comma positive root 15 and 2 comma negative root 15. Again, these are critical points. Okay. अब ये जो critical points हैं, वहाँ पे ग्राफ का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ग्राफ का डायरेक्शन क्या ऐसा चेंज हो रहा है या ऐसे चेंज हो रहा है या ऐसे जाके ऐसे कुछ हो रहा है, ठीक है, वी डोंट नो। तो ये चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? यू विल यूज द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट।
सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आपको कैलकुलेट करना होगा एफ डबल एक्स. You'll have to calculate f double y, and we'll also have to calculate f of x comma y. Sorry, x y. So f double x we call it as r, double y we call it as t, and this we call it as s. So let's calculate these values. We'll differentiate fx, that is equation number 1 again with, sorry, not equation 1, equation 2 with x again. So when I differentiate this partially with respect to x, I'll treat everything else as constant. So the first term will give me 6x. The y square term will give me 0. Then I'll have negative 24x giving me negative 24, and 21's derivative will be 0. So this is my value of r. T is fyy. So I'll take the derivative of equation number 3, which is fy, again with respect to y, partially. So when I say partially, आपको y को छोड़ के बाकी सब constant treat करने हैं. तो first term का 2x derivative होगा because y का derivative 1 है. Second term का derivative negative 4 हो जाएगा. Y का derivative again 1. Let's calculate s. S is f of xy. F of xy का मतलब है f of x को आप y से वापस partially differentiate करोगे. मतलब equation 2 को y से differentiate करोगे partially. So 3x square का derivative 0. आपके पास बचेगा सिर्फ 2y का term. बाकी सारे terms में y का term नहीं है. So you will be left with 2y. Okay. Now once you get these values, you are supposed to calculate RT minus S square for all the 4 points. आपके पास 4 critical points हैं. So I'll start with first of the points and let's do it here itself, one point at a time. So yeah, okay. Point number 1, for the first point was, I believe, 7 comma 0. So x comma y is equal to 7 comma 0. Then what happens to RT minus S square? So RT is 6x minus 24 multiplied by 2x minus 4, and S square would be 4y square. So let's substitute x की जगह पे 7 and y की जगह पे 0. तो first term हो जाएगा 42 minus 24, and यहाँ पे 7 डालोगे तो 14 minus 4. y की जगह 0 डालोगे तो second term 0 होने वाला है. This on subtraction and multiplication, that's 10, and this is going to be 8, 18. Okay. So yeah, this is going to be 18. So 180. This is positive. Whenever RT minus S square is positive, there's chances of maxima or minima. There are chances of maxima or minima. How will you come to know whether it is maxima or whether it will be minima? You will come to know based on the sign of R or T. So let's calculate R at 7, 0. So when I put 7, 0 in R, I will get 42 minus 24, which is 18. Again positive. So now understand, RT minus S square is positive and R is positive. It means f of x comma y has minima at 7, 0. So we found the minima at 7, 0. Let's look back at the question. They're asking you to discuss the maxima and minima. They've not asked you to find the maxima minima. Find करने बोलते तो आप f के इक्वेशन में x and y की वैल्यूज डाल देते हैं, बट यहाँ पे डिस्कस करने बोला है, मतलब कौन से पॉइंट्स पे मिल रहा है वो बोला है. ओके, सो लेट्स डू द सेकंड कैलकुलेशन नाउ. सेकंड पॉइंट हमारा 1, 0 था. सो x, y की जगह पे 1, 0. ओके, अगेन आई हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस इन RT minus S square. मतलब आपको वापस 6x minus 24 into 2x minus 4 minus 4y square में x की जगह पे 1 and y की जगह पे 0 डालना है. x की जगह पे 1 डालोगे तो यहाँ पे negative 18 आएगा, and this would be negative 2, second bracket, and last term will give you 0. So ये answer 36 आ गया, which is positive. Again, as we saw, if it is positive, you can have maxima or minima.
depends on the sign of R or T. So if I calculate R at 1, comma 0, I'll get 6 minus 24, which is negative 18, which is negative. Now this time R is negative means you will have maxima. You will have maxima at 1, comma 0. I hope these two calculations are clear at these 2 points. We still have 2 more points remaining, so let's do the calculation for them. Point number 3 is 2, comma root 15. Okay, again we'll do the calculation of RT minus S square for these points. RT minus S square was 6x minus 24 multiplied by 2x minus 4 minus 4y square. Let's substitute x is 2, so यहाँ पे 12 minus 24. Again x is 2, so this term will be 0. Minus 4 times root 15 का square is 15. So the first term is 0, I'll get a negative 16. Now understand, ये RT minus S square negative आया है. When it is negative, it means f has neither minima nor maxima. Neither minima nor maxima at 2, comma 15, root 15. And such a point is called a saddle point. Is a saddle point. Okay. Now let's check for the last point, that is 2, comma negative root 15. Again, we'll substitute in the place of RT minus S square. So now I'm going to do it directly. So 12 minus 24. And here I'll again get 0 because x की value same है, right? And minus 4 times negative root 15 का square again plus 15 ही आएगा. Again, this is going to be negative 60, which is less than 0. Again, this is going to tell me that f has neither minima nor maxima at 2, comma negative root 15. So 2, comma negative root 15 is also a saddle point. Okay. Now, in case a question had asked you to find maxima minima, यहाँ पे discuss बोला है. Discuss की जगह पे if the question was asking you to find maxima minima, okay, यहाँ पे अगर find word होता तो आप क्या करते, f का इक्वेशन दैट इज इक्वेशन 1 में मैक्सिमा हमको मिला है 1,0 पे, राइट? या सो एट दिस पॉइंट 1,0 यू गॉट अ मैक्सिमा. तो x एंड y की जगह पे इक्वेशन नंबर 1 में 1,0 डालते हैं, मतलब x की जगह 1 एंड y की जगह 0 एंड f max कैलकुलेट करते हैं. सो यू वुड हैव गॉट f max, that is f of 1,0. Okay, so yeah, we can complete that. So that's going to give me 1 minus 12, 21 and 16. So this is 47, 48 minus 12 is 36. And f minimum will be f calculated at 7, comma 0. So in place of x, we'll put 7 now, 343. Y is 0, so second term is 0. 49 into 12, of course, I'll use a calculator. So yeah, 7 cube. Next term is 0, so negative 12 into 7 square. Again, next term is 0. 21 times 7 plus 16. Answer is negative 82. That's your minimum. Okay, so I'll not write this. I'll directly write this, negative 82. So yes, this is what they are expecting you to find, and this is how the question goes. So you found 4 critical points and you examined the maximum minima at all the 4 points. And you found the maximum and minimum values as well. Generally, such a lengthy question is asked for 8 marks, but then yes, unfortunately in December 2019, it was asked for 6 marks. Okay. Moving on to question number 5C. So let's look at the question here. It's a prove that kind of question. Prove that if A and B are unitary matrices, then A into B is also unitary.
तो यूनिटरी मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था? A into A theta should be identity. A into A theta should be identity. A theta क्या था? A theta was A transpose conjugate, or I can say A conjugate transpose. दोनों A theta देते हैं, okay? So yeah, ये प्रूव करना है आपको कि A and B आपके पास given है. So it's given to me. There are two parts to the question. एक sum वाला part है, वो बाद में देखेंगे. पहले proof वाला part देखते हैं. So it's given to me that A and B are unitary matrices. It's given to me that A and B are unitary matrices. Now let's understand if A and B are unitary matrices. So A into A theta will be identity and B into B theta will also be identity. We are expected to prove that AB is unitary. The product is unitary. Okay. अब ये जो प्रोडक्ट है, अगर ये मैट्रिक्स C होता तो आपको क्या प्रूव करना होता? C into C theta is identity. Okay. This is equivalent to proving this. So let's prove it. C की जगह पे, okay, let's start with the left hand side. We'll consider AB into AB theta. So AB into AB theta is nothing but AB into B theta A theta. ये basically ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है. So यहाँ पे associativity से B into B theta मल्टीप्लाई हो जाएगा A theta as it is. But B into B theta हमें पता है आइडेंटिटी है. I'll continue here. Identity multiplied by any matrix is the same matrix. So I'll be left with A into A theta. And A into A theta is again identity. So you can see that your C into C theta is identity, which implies the product AB is unitary. So the first part of the question is completed. Prove वाला part. अब क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई द रिजल्ट फॉर दिस. मतलब ये जो रिजल्ट है प्रोडक्ट इज यूनिटरी वाला, ये आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है. तो फर्स्ट थिंग इज आपको ये चेक करना है कि ए एंड बी यूनिटरी है. सेकेंड थिंग आपको ए इंटू बी कैलकुलेट करना है और उसको भी यूनिटरी दिखाना है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. I'll start with the matrix A. 1 upon root 3 times 1, 1 plus I, 1 minus I and minus 1. Let's calculate A theta. A theta calculate करने के लिए पहले तो conjugate या पहले transpose, कोई भी एक पहले. तो suppose if I take conjugate पहले, no problem अगर आपने उल्टा किया, transpose conjugate कोई भी order में किया, कोई problem नहीं आएगा. Conjugate पहले तो 1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 1 minus I हो जाएगा यहाँ पे 1 plus I हो जाएगा. -1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Conjugate is only for complex numbers. Okay. अब A theta कैलकुलेट करेंगे which is conjugate का transpose. अगर आपने पहले ट्रांसपोज लिया होता तो आप ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लिखते हैं इसको. सो ट्रांसपोज इज रोज एंड कॉलम एक्सचेंज. सो 1 and 1 minus I यहाँ पे, 1 plus I यहाँ पे, -1 यहाँ पे. अब आपको चेक करना है A into A theta. सो लेट्स चेक बिकॉज ये गिवन नहीं है कि A यूनिटरी है. ओके. सो A is 1 upon root 3, 1, 1 minus I, 1 plus I and -1. A theta is also the same value. So 1 upon root 3 का square हो जाएगा basically. And ये 1, 1 plus I, 1 minus I and -1. Matrix multiplication is the area where maximum of Q do lose marks. So I'll do it here in the same space alongside. But let me just tell you, you have two matrices of 2 cross 2 order. So आपका जो आंसर आएगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर 2 cross 2. उसके अंदर 4 एंट्रीज होंगे. Entry number 1, entry number 2, entry number 3, entry number 4. This we call it as 1, 1 because इसका row number 1, column number 1, row number 1, column 2, row 2, column 1 and row 2, column 2. 1, 1 के लिए आप matrix first का first row and second matrix का first column multiply करते हो. So when I multiply, I'll get 1 into 1 which is 1 and 1 plus I into 1 minus I will become 1 minus I square.
Okay. And outside, I will have a 1 upon 3, root 3 ka square. For 1, 2, this element here, 1, 2, row number 1 will be multiplied by column number 2. So 1 into 1 plus I is 1 plus I. And 1 plus I into minus 1 will give me minus 1 minus I. Now for 2, 1, you can understand that I'll be multiplying row number 2 with column number 1. So let's multiply 1 minus I. Negative 1 plus I हो जाएगा ये because of the negative multiplication. And lastly 2 comma 2 के लिए I'll multiply second row with second column. So 1 plus I into 1 minus I will be 1 minus I square. And minus 1 into minus 1 will give me plus 1. So let's calculate 1 by 3. First term is 2 and negative of I square will be plus 1. ये 0 है, ये 0 है, ये भी 2 plus 1 है. So if you can observe, it becomes 1 by 3, 3003, which is nothing but 1001. तो ये identity है. So this implies A is unitary. This implies A is unitary. Okay. Now let's move to B. You have to again prove B is unitary. तो matrix B लिखते हैं यहाँ पे. Matrix B is this. यहाँ से 1 by 2 common ले लेंगे हम. ठीक है. So 1 by 2 common. Again same steps repeat होंगे. 1 plus I negative 1 plus I. I hope आपको सम समझ में आ रहा है ये 1 plus I and 1 minus I. So यहाँ पे अगेन आपको प्रूव करना है कि B यूनिटरी है तो आपको ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज या फिर ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट. यहाँ पे चलो अगर उल्टा करते हैं, पहले ट्रांसपोज लेते हैं तो 1 plus I नेगेटिव 1 plus I यहाँ पे आ जाएगा. 1 plus I एंड 1 minus I होगा. अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये B थीटा बन जाएगा. 1 by 2 को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. सो ये हो जाएगा 1 minus I, ये हो जाएगा 1 minus I, ये हो जाएगा negative 1 negative I और ये हो जाएगा 1 plus I. Let's calculate B into B theta. Let's calculate B into B theta. You can also calculate B theta into B. उल्टा चलेगा. Okay, no problem. So यहाँ पे 1 by 4 आएगा because दोनों में 1 by 2 multiplied है. B की वैल्यू 1 plus I, negative 1 plus I, again 1 plus I and 1 minus I. B theta की वैल्यू 1 minus I, negative 1 minus I, 1 minus I and 1 plus I. अगेन 2 क्रॉस 2 का मल्टीप्लीकेशन है तो 4 टर्म्स आएंगे. फर्स्ट टर्म के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू फर्स्ट एलिमेंट हियर. सो 1 plus I into 1 minus I is 1 minus I square. एंड ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो वापस नेगेटिव 1 का स्क्वायर विच इज प्लस 1 एंड माइनस I स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पे भी I स्क्वायर है. फाइन. Second term will be first row, second column. So first row, second column is 1 plus I, 1 minus I again. So 1 minus I square and negative 1, negative I, positive I and positive I square. Okay. Now again, let's multiply these two terms. This will be row number 2, column number 1. So 1 plus I, 1 minus I is 1 minus I square. And this is row number 2, column number 1. So I'll have negative 1, negative I, positive I and positive I square. Here I'll have row number 2, column number 2. So again 1 minus I square plus again 1 minus I square. So let's simplify this. 1 by 4 as it is outside. First term में 1 plus 1 2 and negative I square दो बार है तो 4 हो जाएगा because वो positive हो जाएगा. यहाँ पे plus 1 minus 1 cancel, plus I minus I cancel, plus I square minus I square cancel. Same thing here also. तो ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, यहाँ पे 4 हो रहा है. You can use a calculator to check this. That's not an issue. 1001 मिलेगा. That's your identity.
So this implies B is also unitary. B is also unitary. And the last thing which you need to check is product. ये जो A into B होगा उसका जो product आएगा वो भी unitary है. So let's do that. I'll also add one more slide in case we require. So पहले product calculate करेंगे A into B. A की वैल्यू में 1/√3 बाहर है, B की वैल्यू में 1/2 बाहर ले लेंगे तो 1/2√3 बाहर. A की वैल्यू is 1 plus I 1 minus I and minus 1. B की वैल्यू है 1 plus I negative 1 plus I. 1 plus I and 1 minus I. मल्टीप्लिकेशन का सेम रूल रहेगा, रो नंबर कॉलम नंबर अकॉर्डिंगली. So first value will be first row into first column. So 1 plus I plus 1 plus I का square. So that's going to be 1 plus 2I plus I square. First row second column. So negative 1 plus I and this will be 1 minus I square. Row number 2 column number 1. So 1 minus I square minus 1 minus I. Row number 2 column number 2. That's going to be okay. Minus 1 plus I minus, okay, this will be plus I and minus I square. And this will give me minus 1 plus I. Okay, let's simplify. So यहाँ पे हो जाएगा 1 plus 1, 2. And this I square will get cancelled basically with plus 1. तो यहाँ पे मिलेगा 1 plus 3I. Okay, this 1 gets cancelled. I square will become negative 1 and minus 4 plus हो जाएगा. तो 1 minus I यहाँ पे. Here I'll have 1 getting cancelled. Negative I square will become 1 and plus I. In this case, negative I square will become positive 1. तो ये cancel हो जाएगा. 3I बचेगा with minus 1. ये आपका A into B है. आपको A into B is again unitary proof करना है. मतलब A into B थीटा निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है वापस. ओके, एंड आइडेंटिटी आना चाहिए. सो A into B थीटा निकालने के लिए अगेन आप पहले ट्रांसपोज या पहले कॉन्जुगेट जो भी करो. तो अगर मैंने कॉन्जुगेट किया पहले, so 1 minus 3I 1 plus I 1 minus I negative 1 negative 3I. रिमेंबर सिर्फ I वाले टर्म्स की साइन चेंज होगी, बाकी किसी टर्म की साइन चेंज नहीं होगी. ए बी थीटा निकालेंगे तो कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, so 1/2√3 as it is. 1 minus 3I 1 plus I 1 plus I and negative 1 negative 3I. Now we need to multiply these. Okay, so I'm expected to multiply AB with AB transpose conjugate, and 1/2√3 is common for both, so 1/4 into 3 हो जाएगा, मतलब 1/12. That's a square. Okay, AB की जगह पे 1 plus 3I 1 plus I 1 minus I and 1 minus 3I if I'm not wrong. No, negative 1 plus 3I. Okay, that's AB. Transpose conjugate is 1 minus 3I 1 minus I 1 plus I and negative 1 negative 3I. Let's check it again. Yeah. Okay, need to multiply them 1/12 as it is. First entry is first row, first column. So 1 minus 9I square, 3I का square हो जाएगा. And first column is 1 minus I square. Next is first row, second column. So that's going to be 1 plus I plus 3I plus 3I square and negative 1, negative 3I, negative I, negative 3I square.
Second row, first column, that's going to give me 1 minus 3i minus I plus 3i squared. And then when I multiply this, I get minus 1 plus I. Okay, I'll continue here. Plus 3i and minus 3i squared. The last term, that's going to be 1 minus I squared. And negative 1 square is plus 1 and 9 I squared. Okay. So this is 1 over 12, first term. 1 plus 9 plus 1 plus 1. This term. 3i gets cancelled. I gets cancelled. 1 gets cancelled. 3i square gets cancelled. So 0. This term here. Negative 1, I, 3i and 3i square. So that's 0. This is 1 plus 1 plus 1 plus 9. Because I square is negative 1. So this is 1 over 12, 12, 0, 0, 12, which is nothing but 1, 0, 0, 1. That's your identity. So you have now proved if A, comma B are unitary, AB is also unitary. Okay, this is what we have proved. We proved it mathematically, we proved it with the help of the example also. That's what was asked. The question asked you to prove and then verify the result. Okay, so we did verify. Moving on to question number 6 now. Yeah. Question number 6 has given you the value of x and there is some relation between the n plus 2th order derivative of y, n plus 1th order derivative of y, and so on. So I'll of course require the value of y. So I'll start with x is equal to cos hyperbolic 1 over m log y. And I write this as cos hyperbolic inverse of x is equal to 1 over m log y. Or I can say log of y is m times cos hyperbolic inverse of x. Or I could, okay, first let me simplify this. Let's use the formula of logarithm here. So m as it is, sorry, not logarithm. Basically, I'll be using the formula for cos hyperbolic inverse. So let's use the formula for cos hyperbolic inverse here. Cos hyperbolic inverse of x is going to be log of x plus under root of x square minus 1. And this m, which is outside the log, will go as a power. So x plus under root of x square minus 1. Let me make this a little smaller. The whole raised to m. Now observe both the sides you have log. So I can write y is x plus root x square minus 1, the whole raised to m. Let's take it as equation 1. We want the nth order derivative, n plus 1th order derivative, and n plus 2th order derivative. And we come to know this looking at this n plus 2th order derivative, n plus 1th, and nth order derivative. To calculate these, we will first start with first order, second order derivative, find some relation between them, and then apply Leibniz rule. So let me first find the first order derivative for this. I'll continue on the same slide. So differentiating both the sides with respect to x, I'll get y dash or y1. I'll call that as a first order derivative. For a raised to m or x raised to m actually, m x plus under root of x square minus 1 the whole raised to m minus 1 you will get. Let's apply chain rule. If I apply chain rule, I'll be left with 1 plus 1 upon root of x square minus 1 multiplied by 2x. Let's simplify this. M, this bracket remains the same. Second bracket becomes root of x square minus 1 plus 2x. Okay. And, okay, just a minute.
Yes. Okay, yeah, it's the formula is 1 upon 2 root x. So 2 gets cancelled. So I'll be left with only x. Now observe both the brackets are exactly the same. Just that the first bracket has m minus 1 power, second bracket has power m, sorry, power 1. So they get added, the powers get added. So I'll be left with power m. Now observe from equation number 1, this entire bracket with power m is nothing but y. So I claim that y1 is m times y. y1 is m times y. Again, I'll be differentiating with respect to x. Okay, we'll again differentiate with respect to x. So now what we get here is y2, m is a constant, and you will now get y1. Okay, I think there is again a denominator as well. Fine. So let me erase this and maybe continue on the next slide. Okay, there's some mistake here. Fine. We were at y1 equal to m times x plus under root of x square minus 1 the whole raised to m divided by under root of x square minus 1, and we replace the numerator bracket with y, we are still left with root of x square minus 1. This is y1. We would again differentiate with respect to x. So the left hand side becomes y2, the right hand side m is constant. Let's apply the formula for u by v. So v remains as it is. Derivative of y would be y1. Y remains as it is. Derivative of this term will be 2 root x square minus 1. And by chain rule, I'll multiply by 2x. Again, the entire thing gets divided by the root square, which becomes x square minus 1. So I am now having m upon x square minus 1. And these two get cancelled. Cross multiplying, I'll have y1 into x square minus 1 minus xy divided by under root of x square minus 1. Okay, this is your value of y2. This is your value of y2. Okay, so I think we cannot simplify this any more further. Or maximum, I can just combine the powers of the denominator, m times y1, and the denominator becomes x square minus 1 the whole raised to 3 by 2. Okay, so we got the value of y2 here. We will now be applying the Leibniz rule to find the nth order derivative, nth order successive derivative. Right? एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से डिफरेंशिएट करने के पहले, ठीक है? So let me just clear this. Yeah. So what I'll do is I'll just cross multiply and square it up. So squaring and cross multiplying y1 का square आ जाएगा m square y square. Okay. Now let's differentiate with respect to x. So uv rule instead of u by v rule. तो uv rule यहाँ पे u derivative होगा 2y1 into y2. Chain rule लगा है, okay? Plus y1 square as it is, x square का derivative 2x, m square constant, y square का derivative 2y and y का derivative y1. So you have to be a little careful. Chain rule applicable होता है. Let's simplify this. So 2 times, okay, हर एक term में 2 है तो 2 से divide कर लेते हैं. And I'm left with x square minus 1, y1 into y2. Okay, also y1 is present everywhere, so I'll divide by y1 as well. So 2 y1 से divide कर रहे हैं. So y2 plus x y1, एक y1 divide हो जाएगा. 2 cancel हो जाएगा, y1 cancel हो जाएगा, m square y. So I'm left with x square minus 1 y2 plus x y1 minus m square y equal to 0. Okay.
अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे लेबनिट्ज रूल. लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग लेबनिट्ज रूल. लेबनिट्ज रूल क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सो इसको यू लेंगे, इसको वी लेंगे. फाइन. एंड as per Leibniz rule, you first start with NC0, NC1, NC2, and so on up to NCM. Okay. And then you multiply here by the derivatives of U. So U first as it is. Then यहाँ पे yn plus 2 हो जाएगा. U का first derivative yn plus 1 हो जाएगा. V exactly यहाँ पे V होगा. Okay. सो जिस टर्म के n डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको आप v लोगे. एंड जिसके डेरिवेटिव्स कम एग्जिस्ट कर रहे हैं या जीरो होने वाले हैं आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स उसको u लोगे. राइट. एंड यहाँ पे कंटिन्यूअसली विल बी a plus sign. So let's start with this particular rule here. By Leibniz rule, फर्स्ट टर्म के लिए Leibniz rule लगाते हैं. तो x स्क्वायर माइनस 1 जो हमारा u है वो एज इट इज बाई n प्लस 2 हो जाएगा इसकी वैल्यू. एंड n टाइम्स नाउ nc1 की वैल्यू n होती है. यहाँ पे 2x yn प्लस 1. nc2 की वैल्यू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 होगा. 2x के डेरिवेटिव 2 होता है. yn बचेगा. इसके बाद के सारे डेरिवेटिव जीरो होने वाले हैं तो आगे के कोई टर्म्स बचने वाले नहीं है. ओके. अब सेकेंड टर्म के लिए uv करके अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे अगेन दिस विल बी u एंड दिस विल बी v. सो लेट्स अप्लाई इट हियर. फर्स्ट आई विल हैव x एज इट इज एंड y1 का nth ऑर्डर डेरिवेटिव n प्लस 1 हो जाएगा. n टाइम्स x का डेरिवेटिव 1 है एंड yn बचेगा यहाँ पे. इसके बाद के सारे डेरिवेटिव जीरो होंगे. थर्ड टर्म इज एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट. सो यहाँ पे एम स्क्वायर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे लेबनिट्ज नहीं, डायरेक्टली nth ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके. सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. जितने भी yn प्लस 2 के टर्म्स है वो साथ में लेते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 2 एक ही टर्म है. n प्लस 1 वाले सारे टर्म्स. सो n प्लस 1 के टर्म्स ये और ये रहे. सो yn plus 1. Okay, first term is 2nx and I have a x here. Next I'll take all yn terms. तो ये 2 तो कैंसिल हो गया. यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n बचा है और यहाँ से yn का टर्म लिया तो ये n बचेगा और यहाँ से m स्क्वायर इक्वल टू 0. So x स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स yn प्लस 2. x कॉमन ले लेते हैं तो 2n प्लस 1 टाइम्स yn प्लस 1. n कैंसिल हो जाएगा तो n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर टाइम्स yn. ओके. एंड लेट्स ऑब्जर्व क्वेश्चन में. ओके, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर आ रहा है. डिड आई मिस आउट समवेयर? या द लास्ट टर्म वाज एक्चुअली नेगेटिव. तो ये नेगेटिव था तो ये यहाँ पे माइनस एंड ये नेगेटिव एंड यहाँ पे भी नेगेटिव. सो यस, वी गॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड using Leibniz rule. I hope this question is clear. Now this is question number 6b, which I have already solved in one of my previous videos. I will add the link of that video here for you to refer so that we save on time. Already the video is becoming a little long enough. I don't want to cut it in between because we are now left with only one more sum. So yeah, okay. Question number 6c is again an 8 marks question divided into two parts. Question number c1 and question number c2, दोनों questions 4 marks के लिए है. फर्स्ट क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे. सो साइन रेज टू 4 एंड कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म दिया है यहाँ पे. ओके. सो या वी कैन डू इट इन 2 to 3 different techniques here. First technique being, okay, before we start with this question, ये जो expansion वाले questions है, sin raised to 4, cos square, इस तरह के questions almost हर एक PYQs में आप देखोगे. तो यू कैन कंसिडर कि ये टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है.
सो यहाँ पे इस पे वर्क करना चालू करेंगे. सो आई टेक द मोस्ट जनरल मेथड. ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न वाला मेथड नहीं लेंगे बिकॉज पावर्स अगर चेंज होते तो आपको पता होना चाहिए कैसे करना है. सो यहाँ पे साइन थीटा के एक्सपेंशन से स्टार्ट करेंगे. साइन थीटा हमने पहले वाले सम में भी देखा था आज ही. ई रेज टू आई थीटा माइनस ई रेज टू नेगेटिव आई थीटा डिवाइड बाई 2i लेते हैं इसको. ओके. अब मुझे पावर 4 लेना है. पावर 4 के लिए आई विल टेक हेल्प ऑफ पास्कल्स ट्राइंगल. पास्कल्स ट्राइंगल जिसको नहीं आता है जस्ट शो यू 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 इस तरह से क्रिएट होता है. ये दो नंबर्स का एडिशन यहाँ पे, इनका एडिशन यहाँ पे, एंड सो ऑन. ओके. हमको पावर 4 चाहिए तो हम ये वाला रो यूज करने वाले हैं 14641 का. लेट्स स्टार्ट विथ साइन रेज टू 4 थीटा. ओके. साइन रेज टू 4 थीटा के लिए 1/2i रेज टू 4 हो जाएगा. मतलब 1/16 i रेज टू 4. न्यूमरेटर के लिए 1 4 6 4 1. I'll create space here. You can of course do this Pascal's triangle and things like that in your rough. Okay. Starting with the first term, e raised to I theta का highest power 4i theta, 3i theta, 2i theta, I theta. Then you start with the last term, e raised to negative 4i theta, negative 3i theta, negative 2i theta, negative I theta. And because बीच में माइनस साइन है तो alternate negative, positive, negative, positive signs आएंगे. So let's simplify this. e raised to 4i theta first term, उसके साथ plus e raised to negative 4i theta last term. Again minus 4 e raised to यहाँ पे powers को simplify करोगे तो 2i theta बचेगा. I'll completely erase this now. Okay. And negative 4 e raised to 2i, negative 2i theta बच रहा है. 6 के साथ i theta नहीं बच रहा है. And यहाँ पे नीचे 16 i raised to 4 की वैल्यू 1 होती है तो 16 बच रहा है. So the first two terms are e raised to 4i theta minus e raised to minus 4i theta. तो ये आपका 2 times cos 4 theta हो जाएगा. i के साथ जो नंबर होता है वो एंगल में जाता है और प्लस है तो cos होगा, माइनस होगा तो साइन. यहाँ पे नेगेटिव 4 कॉमन लोगे तो बीच में प्लस है वापस. तो ये cos 2 थीटा हो जाएगा. एंड अगेन ये 2 टाइम्स आएगा बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर 2 and 6 as it is. The entire thing is still divided by 16. So this is 2 times cos 4 theta minus 8 times cos 2 theta plus 6 divided by 16 or multiplied by 1 by 16. I can take 2 common and I'll have cos 4 theta minus 4 cos 2 theta plus 3 हो जाएगा divided by 8. I leave this as equation number 1. I still have to calculate cos square theta. Cos square theta का डायरेक्ट कैलकुलेशन है एक्चुअली हमारे पास, हमको ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. cos square theta is 1 plus cos 2 theta. हमको कैलकुलेट करना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको क्वेश्चन में पूछा गया है साइन रेज टू 4 थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर थीटा. सो साइन रेज टू 4 थीटा की वैल्यू यहाँ पे लेके आएंगे हम. cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा प्लस 3 इंटू 1 बाई 8 है. और यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा, ओके यहाँ पे डिवाइड बाई 2 भी आएगा. डिवाइड बाई 2 तो ये टोटल डिवाइड बाई 16 हो जाएगा. 8 and 2. ओके. So let's multiply now 1 by 16 as it is. Cos 4 theta into 1 is cos 4 theta. Then you'll have cos 4 theta into cos 2 theta. Then you will have negative 4 cos 2 theta. Then you'll have negative 4 cos square 2 theta plus 3 cos 2 theta. Okay, let's simplify. 1 upon 16 cos 4 theta. अब यहाँ पे we'll apply the formula. Cos A into cos B would be equal to cos of A plus B
plus cos of A minus B with half. Okay, so this becomes 1 by 2. Cos of A plus B will be cos 6 theta, and cos of A minus B would be cos 2 theta. And there's a 1 by 2, of course. Minus 4 times this is cos 2 theta as it is. No simplification. 4 times cos square 2 theta. Cos square 2 theta will be 1 plus cos 4 theta divided by 2. Plus 3 as it is. Plus 3 cos 2 theta था तो ओके ये दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो माइनस cos थीटा बचेगा यहाँ पे. ओके 4 minus 3. सो यहाँ पे अब मेरे पास बचा है 1/16 cos 4 theta plus okay yeah cos 6 theta by 2 cos 2 theta by 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 minus 2 cos 4 theta and plus 3. Last simplification. So 1/16 as it is. Cos 4 theta यहाँ पे भी है and second last term में भी है वो negative है तो I'll be left with negative cos 4 theta. Cos 6 theta is all along and divided by 2 है. Then cos 2 theta is again alone but divided by 2. Lastly, negative 2 1 plus 3 will give me plus 1. Okay. So let's bring the 16 inside or I'll take this 2 outside. So 1/32 highest power से start करेंगे या highest angle cos 6 theta minus 2 cos 4 theta because 1/2 लिया है बाहर. Cos 2 theta again okay and यहाँ पे 2 हो जाएगा because of 1/2 taking out. So this is your final answer. Question में बोला था multiples of theta मतलब 2 theta 4 theta 6 theta ये multiples of theta है. ये आपका required answer हो गया A part का. That is a 4-mark question. Let's move to the B part. One root of the equation is given to you as 1 plus I. Find the other roots. अभी ये degree 4 polynomial है. Degree 4 polynomial के 4 roots होंगे. Complex root जब होता है वो conjugate pair में होता है. So if one root is 1 plus I, therefore other root will obviously be 1 minus I. ये root होगा ही होगा. Okay, conjugate pair. So now I get 1 plus I into, okay, rather this is a root. So x minus 1 plus I into x minus 1 minus I. ये दोनों roots, okay? It will divide, say, let me call this as p of x. Okay, so it will divide p of x. So इस पहले simplify करते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा x square minus x times 1 minus I minus x times 1 plus I plus 1 minus I square. Okay, this divides p of x. So और सिंप्लीफाई करेंगे x स्क्वायर माइनस x कॉमन लेते हैं इन दोनों का एडिशन आई कैंसिल एंड 1 plus 1 2 हो जाएगा तो ये 2x बचेगा एंड ये भी 2 हो जाएगा तो प्लस 2. दिस डिवाइड्स p of x. इसका मतलब है कि रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा. सो चलो डिवाइड करते हैं जो कोशेंट होगा वो हमारा बाकी के फैक्टर्स देगा. सो लेट्स स्टार्ट डिवाइडिंग. आई विल डिवाइड इट हियर इटसेल्फ. x raised to 4 minus 6x cubed plus 18x squared minus 24x plus 16. I'll divide it by x squared minus 2x plus 2. So the first portion will be x squared, multiply करोगे तो x raised to 4 minus 2x cubed plus 2x squared बचेगा, subtracting. X raised to 4 gets cancelled, negative 4x cubed plus 16x squared minus 24x plus 16 बचेगा. Minus 4x will be the next portion, to minus 4x cubed plus 8x squared
minus 8x. Signs change. यहाँ पे ये cancel होके 8x square minus this will be 16x plus 16. Let me put a plus 8 here, and if I put a plus 8, you can see, I'll just continue here. Actually, you should continue on the same thing. So आपके पास आएगा 8x square minus 16x plus 16. Subtract करोगे तो 0 बचेगा. So now I can write my p of x as x minus 1 plus I into x minus 1 minus I into ये जो quotient है x square minus 4x plus 8. अब ये x square minus 4x plus 8 is nothing but ये दोनों brackets first as it is. ये आपका हो जाएगा okay, let's do one thing. Calculator use करते हैं. Equation मोड़ पे quadratic third one. So x square का coefficient 1 minus 4 and 8. So 2 plus 2i and 2 minus 2i. Okay. So ये आपके बाकी के roots आ गए. So I'll just write this as, therefore all the roots are, first was 1 plus I which was given, 1 minus I which is a conjugate, 2 plus 2i which we found right now, and 2 minus 2i. Observe there are 4 roots. Okay. So yeah, this completes your December 2019 question paper. I hope solving the entire paper must have helped you understand the entire syllabus as well. You're expected to solve any 3 questions from 2 to 6 and question number 1 compulsory. All the very best for your exams. May not be able to solve all the questions after this. Try to solve one entire paper at least for you. Okay? All the very best.